कोरोना बंदी पर विश्व के विद्वान एपीआई के नीतियों की तर्ज पर कास्मो ह्यूमनिज्म का समाधान। एनडीटीवी के कई कार्यक्रम और एपीआई की नीतियों की विशेषता, देखिए यह विशेष रिपोर्ट। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनेक अंगों अर्थात कास्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक व प्रवर्तक, देश के आज के समय के सबसे ज्यादा अध्ययनरत व दूरदृष्टि वाले नेता धीमान विजय मानकर साहब पिछले 15 दिनों से देशवासियों को कोरोना संबंधी विभिन्न समाधान व मोदी सरकार की अवैज्ञानिक व अमानवीय नीतियों पर कई पोस्ट और वीडियो के माध्यम से अग्रणीय तौर पर हमें बता रहे हैं। इसके दो असर स्पष्ट तौर पर इस समय हमें देखने मिल रहे हैं। एक, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां उनके ही द्वारा बताए कई समाधानों पर बाद में बोल रहे हैं। इस संबंध में हमारी एक अलग रिपोर्ट आप जरूर देखें। दूसरा, धीमान विजय मानकर साहब, जो कि एक विज्ञानवादी एवं मानवतावादी नेतृत्व है, उनके ज्ञान व विज्ञान व अनेक समाधानों की वैश्विक समझ इसी बात से प्रमाणित हो रही है कि जो आर्थिक व सामाजिक समाधान उन्होंने 24 मार्च के बाद इस विषय में बताना शुरू किए, अब दुनिया के कई विद्वान भी वही बात बोल रहे हैं। विदित हो कि 1,70,000 करोड़ के पैकेज के पहले ही विजय मानकर जी ने यह बात स्पष्ट की थी। पहला, 2-4 हज़ार रुपया हर नागरिक के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाए, विशेषतः जिनकी सरकारी या किसी कानून में बाध्य आय नहीं है, या 26 करोड़ भारत के परिवारों के एक व्यक्ति के अकाउंट में 4-5 हज़ार रुपया डाला जाए। दूसरा, भारत के हर जरूरतमंद को बगैर राशन कार्ड देखे एक फार्म भरवाकर इलेक्शन की स्याही लगाकर 1 या 2 रुपये किलो में चावल, गेहूं, दाल, तेल इत्यादि जीवन आवश्यक चीजें 2-3 महीनों के लिए दे दी जाए। तीसरा, स्वास्थ्य में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि एवं इंश्योरेंस किया जाए एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पब्लिक हेल्थ केयर को विशेष पैकेज से तत्काल मजबूत करने की शुरुआत हो। चौथा, माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम अर्थात छोटे बड़े उद्योग के लिए अलग से पैकेज बनाया जाए। अंततः बड़े उद्योगों के लिए भी अलग से पैकेज दिया जाए। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में यदि केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज बनाती है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसका आर्थिक वहन करती है तो जीडीपी का 4 से 5% अर्थात 8 से 10 लाख करोड़ रुपए में ये सारा समाधान निकल सकता है। इसमें का आंशिक पैसा सरकार 10 लाख से ज़्यादा आय कमाने वाले लोगों पर 1 से 2% कोरोना टैक्स लगाकर बाद में रिकवर कर सकती है। ऐसा टैक्स बड़ी संपत्तियों पर और धार्मिक संस्थाओं के संपत्तियों पर भी लगाकर सरकार इसे काफ़ी हद तक रिकवर कर सकती है। इसका यह परिणाम होगा कि जहां कोरोना की महामारी से स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवस्था को सबल कर हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को विजयी बना पाएंगे, वही कोरोना बंदी की आर्थिक व सामाजिक मार से गरीब, श्रमिक, स्वयं रोजगार, बेरोजगार और छोटे बड़े उद्योग करने वाले लोग इसके शिकार नहीं होंगे और उनकी वार्षिक आय व संपत्ति में भारी नुकसान नहीं होगा। इन नीतियों से विज्ञान और विश्वव्यापी ज्ञान के समाधानों से एक तरफ कोरोना की महामारी भी कमजोर हो जाएगी और दूसरी ओर सार्वजनिक हित भी साध्य होगा, गरीबी और विषमता भी नहीं बढ़ेगी। कास्मो ह्यूमनिज्म, विज्ञान व अनेक समाधान की इन नीतियों से परोक्ष अपरोक्ष तौर पर अब कई वैश्विक व्यक्तित्व भी सहमत नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कल 3 अप्रैल को एनडीटीवी के चीफ एडिटर प्रणब राय जी ने एक काबिले तारीफ 1.5 घंटे का कार्यक्रम चलाया, जिसमें नोबेल लॉरेट बनर्जी व ड्यूफ्लो अमर्त्य सेन ने अपने विचार विशिष्ट तौर पर साझा किए। वहीं भारत के पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, आर्थिक विशेषज्ञ कौशिक बसु और समीर घरडे इत्यादि ने भी अपने विचार साझा किए। उनके मतों से भी भारत को 8 से 10 लाख करोड़ अर्थात जीडीपी का 4 से 5% कोरोना की समस्या के लिए खर्च करना चाहिए। अमीर और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सबके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा करना चाहिए। कई लोगों को अनाज व अन्य जीवन जीने की आवश्यक खाद्य सामग्री मुफ्त या कम दरों पर देना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को अब से आगे मजबूत बनाने का कार्य करना चाहिए। उसके बाद छोटे बड़े उद्योगों को विशेष आर्थिक पैकेज की मदद करना चाहिए, जिसमें रोजगार व आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित हो सके। अंततः केंद्र को राज्यों की आर्थिक मदद करना चाहिए और 1 साल के लिए फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को रिलैक्स कर देना चाहिए। For what happens after the lockdown, what are the steps that India should take now? Yeah, right. Firstly, I think, Prannoy, just kind of, it's important the words that we use.
I don't think we should be talking about stimulus at this stage. This is not remember, this is an unusual thing. It's not that, economy is down, we want to bring it back up, because by definition, we can't bring it back up. So I think that's not, and I'll come to that in just a second. First of all, I think you're absolutely right. I think the government has taken some very important first steps, both on the medical and the health side, but also on the the economy. So just work through it step by step, I would say. I broadly agree that we should probably be spending somewhere between 4 to 5% of GDP, compared to the US's 10%. And I think today, so far, the first package, at least by the government, was closer to 1% of GDP. And so I think there's more we could do. Now, the two, I think, big things in terms of what we need to do is whatever it's going to take on the health side, whether it's free testing, buying these things, vaccines, I think there should be no resource constraint on that. So that those expenditures should go up. The second, I think, is what we call the cushioning, the insurance of the vulnerable. That should also, I think, probably be ramped up. I think what the government has done so far is very sensible, in the sense that social insurance cushioning, it's basically used the existing social safety net, for example, the PDS and the cash transfers to do this. But I think here is a situation where one should err on the side of generosity, whether it's in terms of how many people are covered, how much is given, for how long it's given. I think we should be much more generous. Just to give you one example, I don't think at this stage we should obsess with targeting, finding the poorest. All these Jan Dhan accounts are there, the JAM accounts are there, infrastructure is there. I think we should just be pushing money into all these bank accounts. If some quote unquote less vulnerable people also get it, I think that's worth paying the price. Because if we say, only those with BPL or Aadhaar or whatever get it, we're going to miss out on a lot of deserving people. So I think we should, do that one. That's one principle. Second, I think it's kind of relates to Professor Sen's about the cooperative part. We forget that a lot of the action, the response is coming from the states. Right. So I think the states should have the freedom and the resources to spend more. So one immediate thing that I would think of doing is that, remember, the states are also under this, fiscal responsibility legislation. I think, for this year, I think the states should be free to spend whatever they need to and not be overly constrained by all these, I think, fiscal responsibility things. So I think, that's something we should probably do quite immediately. And the last point I would say is that we need to depart from the playbook, the conventional playbook, whether it's, how much, the 3.5% deficit target. I think we should completely, at least put that in abeyance, at least for this year. We may need to do some money, printing of money. I think, on a one-off basis, I think that should also be considered. Right. So I think these are the things that I think I would do, whatever it takes on the health side, whatever it takes for the social cushioning, and then pure stimulus in terms of getting back. I think we should think about that a little later. But I would also say, to be a little bit optimistic, Pranoy, is that I do think that once, we see the worst, I think the economy will recover quite sharply, quite quickly. So to go back to those charts that you were presenting, that, even if the depth of this recession globally may be greater than in the past, I'm hoping that the duration will be shorter than World War I or the pandemic. Them with us, because technology is important. But could you give us 2 or 3 examples of how technology can help in a crisis like this? Yeah, and thanks, Dr. Roy, for giving us this opportunity to talk. But in most other crises like this, or
even if you had floods, for example, or you had SARS, like you mentioned, I think some of these things were limited to a particular region, right? It was never the kind of scale that we are seeing on this pandemic, which is like global in nature, right? 190 countries. So, typical business continuity plans are based on a premise that, you'll have one city or one state or one country impacted, but you could move your business to be handled from another country, another city, or another state. This doesn't work in this environment. So I think, the kind of challenge that we are seeing right now is unprecedented, a word which is probably being used very often in this. But just to give you a few examples, right, if you look at the IT BPO sector, right, or the ITES sector in India, which kind of employs around 4.5 million people and generates close to $190 billion of business. There were some regulatory issues which did not allow folks to actually work from home, right? So it was a massive safety issue if people in large numbers continue to work in office. So we actually had, worked very closely with the Department of Telecom and with NASSCOM and Department of IT, etc., to kind of relax these norms. And again, to use the word unprecedented, they kind of did the relaxation in less than 2.5 days. And today, pretty much, I would say a large proportion of that 4.5 million people in that industry are actually working from home based on solutions from Cisco, Microsoft, and the others. In fact, 70,000 of our employees are working from home, pretty much all of them. The second area that we are seeing probably a lot of use of technology is education, right? So if you look at it, I think the UN report says school closures have impacted nearly 1.5 billion students worldwide. We are helping these institutions use Cisco WebEx to help students in schools like Indus. Most of the IITs are using it now. ISB is using it. Of course, you've seen enough and more examples of healthcare where Bombay Municipal Corporation is using Cisco video conferencing and other facilities to do this stuff. And lastly, I think the adoption by leaders around the world is kind of something that we've been very pleasantly surprised with, right? So the G20, the G7, Prime Minister Modi talking to SAARC leaders, all of this is happening over technology and adoption of digital and video communications, which we've never seen before. But the key point is, what would you recommend that we do for the poorest, and obviously the daily wage laborers and the very, very poor who are really suffering at the moment? Can't talk to them about budget deficits. Esther Duflo? Yeah, I think Abhijit said the most important things. One way to tie what Abhijit just said and what was said before by all of your guests is that maybe we should not think of this in terms of trade-offs. Maybe we should not think there are trade-offs between lives and livelihood, because and maybe we should not think that there is even a trade-off between sustaining people today and the macroeconomy, because everything hinges on the ability of the poorest people to survive this lockdown. And when I say everything, is on the health side. There is no trade-off, because after 3 weeks, if they cannot earn any money, there is nothing that is going to keep them home. Like, no police is going to be able to keep them home. So the lockdown would fail, and with it, the health consequences would immediately follow. So in that sense, there is no trade-off between sustaining people's livelihood and ensuring their health. The lockdown is necessary, but it can only succeed if we have a way to sustain people's lives. And likewise, as Abhijit said, there is a great danger of the economy of the economic shock to snowball, where it starts from a demand shock where people are unable to buy anything because they don't make any money, and therefore nobody is able to
sell them anything, and therefore the people who would produce what these people would sell also lose their job and their livelihoods and so on and so forth. And this snowballing would actually be the one thing that might undermine a quick recovery of the economy after the pandemic is finished, if everybody has gone bankrupt in these cycles. So we need to maintain this too. Fortunately. Can I just interrupt? I think I would emphasize too, in particular, there are many lessons. I'm not that worried about the economy bumping back. The economy will be very badly affected, partly because of the lockdown itself. But the Indian economy is quite resilient, and it will come back. We have an eager labor force. We have good entrepreneurs, so that will come back. I think the problems are, one, the complete neglect of health care, which has predated the present government, but it's certainly gotten worse under the present government. So I think we need to spend much more on health care, and particularly primary health care. Not when you have special illnesses, go to a hospital, perhaps a private hospital, and government will meet the bill. I think what we need is an infrastructure of primary health care. India doesn't have it. China has it. Korea has it. Taiwan has it. And in fact, all the countries that have dealt with the crisis well, and also raised the life expectancy and lowered the morbidity rate of the population, have, and India doesn't have. It's a perennial neglect which has to be remedied. I think same could be said to some extent about education, though there is more happening. There's more reliance on private education in India than is justified. I think we need much more public schooling in a way that every country, from the United States to Russia, no matter where you stand politically, has done, and not to mention Europe. And that's to be done. I think these two, but basically also this idea that a lot of crisis is not a war. They are reasons for a cooperative solution. Being anti-government is not being anti-national. The understanding that a democracy has a good reason for cooperation, even when it's not immediately obvious why it's needed. It's needed because that's how democracy is successful. So these are lessons I would say we should take away from this. And, it's a big tragedy, and we can all of us can do our best in a cooperative way to have it successful. So last question, I'll go back to Kaushik. Basu, thank you so much for staying with us. Now, during this lockdown period, people say that the main thing you've got to do is prepare. So are there any specific thoughts you may have, and what measures that one should take the minute the lockdown period goes away, which is not too far now? Yes, actually, I have several suggestions, and I've been going back and forth with friends and economists around the world. I've just been corresponding with economists in Israel, and I do have suggestions actually on these. Number one, on which steps are already being taken, but I have a fine-tuning idea. Reaching cash to the poor, to the masses, is important, but it may not be enough. And we know this from historical examples like the Bengal famine. If you give cash to the poor, and if food goes in short supply, they will be outcompeted because food prices will rise to the point where the poor are unable to buy. So this is a time where there has to be a lot of emphasis on direct support. Provide food to the poor directly. Provide health services to the poor directly. And I have been among economists relatively conservative on this historically, that generally it's better to give cash. But in times of crisis like this, the support has to be direct, and you have to reach it to the doorstep. And India is in many ways sophisticated enough in crisis that we can do a minimal amount of that. Number two, can I go through? I've got three suggestions actually. Number two, the transport lockdown and this kind of a lockdown
actually maybe to start with the right thing to do, and India has started early. But 3 weeks down the road, we have to begin to move. You have to have minimal amount of people moving by trains and planes, and we have to have intelligent rules, and we can think of novel rules. Allow airlines to fly, but have a rule saying that no plane can be more than 25% full or half full. Every second seat has to be empty. These kinds of simple rules will bring down the risk of a transmission in the plane hugely. At the same time, not lock down the economy totally. People will begin to move, goods will begin to move, small businesses will start up. And similarly for trains, you have to allow this to move, because otherwise 2-3 weeks down the road, we will feel supply chains breaking down, shortages emerging. Number 3, employment is a very big concern. You know, the US Fed has done, one of the branches of the Fed, I think it's a St. Louis branch, has done a study now predicting that in this quarter, unemployment will go to over 30%. 32% is the estimate. If unemployment goes up, and actually, why did I put in the if? Unemployment is going to go up everywhere. You have to, again, have innovative ways of managing this so that small businesses don't go out of control. And we have actually good examples coming out from Denmark and from Britain, United Kingdom. And in the United Kingdom right now, the Chancellor is an Indian, Rishi Sunak. Steps that they have taken is government stepping in to tell firms that we will provide a part of the salary of your workers, don't lay them off. So a part of the salary is being dished out by the government, and the fiscal deficit is therefore widening at this time, but employment remains more or less intact, and it's not just a dole being given out to people. These are the kinds of, these 3 are just examples of innovative ways in which we have to think, and at the end of now, barely 2 weeks, less than that, we have to start on these immediately. उपरोक्त विशेषज्ञों के सारे ही मत एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजयमानकर साहब से 100% मेल खाते हैं। इसी से उनकी प्रखंड पढ़ाई, दूरदृष्टि और मानवता की सोच प्रस्थापित होती है। देश के प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आकर क्राइसिस में देश के लोगों को डरा देते हैं, 2-3 घंटे का टाइम देते हैं और उससे और ज़्यादा अफरा तफरी मचती है। इस तरह की परिस्थितियां निर्माण हुई और उसके वजह से आज हम देख रहे हैं कि हर भारतीय को 336 रुपए का लॉस हो रहा है। पूरे देश को लगभग 8.5 से 9 लाख करोड़ का नुकसान होगा यदि ये पूरा लॉकडाउन चला और ये जो पैकेज डिक्लेयर किया वो फिस्कल डेफिसिट 4.7% होगा। जो बैंक के एसेट्स है उसका 10% जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये जो 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज मोदी गवर्नमेंट ने दिया उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो नई हैं, जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से कर्मचारी 75% अपना एडवांस ले सकते हो, तो कर्मचारियों का पैसा है, वो कोई सरकार ने पैसा नहीं दिया। पहले 30-40% वो निकाल सकते थे एडवांस, अभी 75% किया। इसके साथ मनरेगा की जो रोजगार बढ़ाए हैं वो तो उस पर डिपेंड करेगा, मनरेगा का काम जब होगा गांव में तब वो रोजगार मिलेगा, आज तो उसका फायदा नहीं होगा और वैसे भी 6-6 महीने तक जो है मनरेगा का रोजगार नहीं मिलता है। इसके बाद में जो स्टेट के अंदर में जो फंड पड़ा है कंस्ट्रक्शन वर्कर का, उसको यूज करने की बात की, वो भी भारत सरकार ने कोई एडिशनल पैसा तो जो है अपनी तरफ से दिया नहीं है। जो 80 करोड़ लोगों को गेहूं चावल दाल देने की बात की है, तो पीडीएस ऑलरेडी देश में चलता है, बहुत सारे करोड़ों लोग पीडीएस में पहले ही पैसा मिलता है, अनाज लेते हैं, अब कुछ लोगों को और मिलेगा। तो ये 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज नहीं है। और हम देख रहे हैं जहां दुनिया के देश 2% जीडीपी से लेकर 15% जीडीपी का जो है वो देने के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिका जैसे देश ने $3,000 तक के जो है उनके अकाउंट्स में पैसा डाला। जापान की सरकार ने 12,000 येन तक जो है वो नागरिकों को पैसा दिया। ऑस्ट्रेलिया में लो इनकम ग्रुप्स में $750 जो है वो नागरिकों को दिए। वहीं मोदी सरकार जो है ये क्राइसिस लाकर, और यहाँ प्रधानमंत्री डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसकी चेयरपर्सन स्वयं प्रधानमंत्री है और 9 लोग उसके अंदर हैं। फिर यूनियन होम सेक्रेटरी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो है वो चेयरपर्सन है। इसके साथ में जो है होम सेक्रेटरी है, हेल्थ सेक्रेटरी है, हेल्थ मिनिस्टर है। ये तमाम लोगों की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो कदम उनको जनवरी-फरवरी से लेने चाहिए थे वो कदम उन्होंने ना लेते हुए एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड एक्ट्स ऑफ ओमिशन दोनों कर जो है भारत को इस परिस्थिति में लाया
कि आज देश के ये तमाम लोगों का इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और उसमें हर भारतीय को ये फेस करना पड़ रहा है। और हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के गलत निर्णय करते रहे हैं। नोटबंदी के समय हमने देखा, गलत जीएसटी के संबंध में देखा, हमने फिर एनपीआर सीए के समय में ये तमाम चीज़ों को देखा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है विज्ञान को ध्यान में रख के, नीतियों को ध्यान में रख के, संविधान और मानव अधिकारों को ध्यान में रखकर जो है वो निर्णय नहीं लेते हैं, उसके वो आदी नहीं है, हम ये जानते हैं। लेकिन यहाँ उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस डिजास्टर को रोकने के लिए कदम जनवरी से लेते, तो जो उन्होंने नहीं लिए, ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है। अब इसकी भरपाई देश में कौन करेगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर आया हुआ है और इसका जवाब जो है बीजेपी की सरकार को देना पड़ेगा। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों की तरफ बड़े बारकाई से ध्यान रखकर है और सही समय आने पर जो है इस पर सही कदम उठाएगी और आगे की इन्फॉर्मेशन आपसे हम तब शेयर करेंगे। आज मैं समझता हूँ कि इतना ही कहना जो है वो उचित है। और जो लोग डोनेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड में, तो वो जो है क्या सही में खुद की संपत्ति से डोनेट कर रहे हैं या वो जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा है उससे डोनेट कर रहे हैं, जरा ये भी चेक कर लिया जाए। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां सीएसआर का पैसा यूज ही नहीं करती है। ऐसे समय में वो जो है कहीं सीएसआर का पैसा डोनेट तो नहीं कर रही या अपने प्रॉफिट से एक्चुअली डोनेट कर रही है, ये भी एक देखने की जो है वो समय है। और कुछ हद तक राज्य सरकारों की भी इसमें जिम्मेदारी है कि उन्होंने भारत सरकार को समय रहते रहते जो है वो सचेत नहीं किया, उनको जो है वो कंट्रोल में नहीं लाया। तो मैं समझता हूँ कुछ आंशिक जिम्मेदारी 10-15-20% की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी सीएम्स की भी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे कानूनी, संवैधानिक और मानव अधिकार के पहलू है। और अब ये कॉम्पनसेशन कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, 336 रुपए जो हर दिन का लॉस हुआ है, जितने दिन ये चलता है उसका कौन भरपाई कर देगा, ये सवाल बड़ा सीरियस सवाल है जिसके तरफ अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ध्यान रखकर है। और प्रधानमंत्री जी को इसमें कैसे हम अकाउंटेबल बना सकते हैं, इस पर भी हमारा जो है वो प्रयास चल रहा है और समय आने पर मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा। यहाँ हम एनडीटीवी के चीफ एडिटर प्रणव राय जी को विशेषतः धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिछले कई दिनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के कई वैज्ञानिकों, विद्वानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति के विशेषज्ञों से इस पूरी समस्या के कई पहलुओं पर वैज्ञानिक व विश्लेषणात्मक विचार लिए हैं, जो गोदी मीडिया की एलो मेलो जर्नलिज्म के परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फेयर जर्नलिज्म के नए मानकों को प्रस्थापित कर रही है। हम एनडीटीवी से 2 निवेदन करना चाहेंगे कि 5 तारीख को रात 9 बजे 9 मिनट तक इन तमाम विशेषज्ञों के समाधानों की एक समरी लिस्ट हिंदी व अंग्रेजी में एडिट कर देश की जनता के बुद्धि को प्रकाशित करे। कभी प्रणव राय जी को एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजयमानकर साहब का इंटरव्यू भी अंग्रेजी में लेना चाहिए, जिससे देश और दुनिया की कई पहलू 45-50 मिनट में देश और दुनिया को पता हो सके। एनलाइटन न्यूज इंडिया एनडीटीवी के चीफ एडिटर प्रणव राय जी को उनके इस विज्ञान व ज्ञान के कार्यक्रमों के लिए विशेषतः धन्यवाद देती है। पर मोदी सरकार की समझ पर क्या इन चीजों का प्रभाव जल्द पड़ेगा या अपनी मूढ़ता में वह अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक निर्णय लेती रहेगी, यह देखना होगा। 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं।